Cotton production in Pakistan is essential for the economic development of the country. Cotton is grown as an industrial crop on 15% of the country's land. It is the largest exporter of cotton yarn. Bahawalpur division is the main cotton producing area in Punjab. It produces 40% of Punjab and 30% of Pakistan's cotton. In cotton growing areas, many farm workers, including children, work alongside their parents. Forced and child labor is alarmingly common in the cotton industry. Sometimes rural poverty means that even children have to spend long periods of time working hard to support their families, due to which they are not only deprived of basic needs, but also away from the wealth of education. इस वक्त दो मेजर लॉस जो हैं वो इन फील्ड हैं, जिसमें एक पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एट ब्रिक किलन्स एक्ट है 2016 का, और सेकेंडली पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016 का है। जो कपास चुनने वाली बच्चियां हैं उनकी उम्र 15 साल से कुछ की कम है और कुछ की ज़्यादा है, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मानते थे, किसी के दादा नहीं मानते थे, तो ऐसे बच्चों को काफ़ी मुश्किलात थी। और बच्चों को ना हम सुनते थे कि काफ़ी बच्चियां ऐसी हैं जो चाहती थी कि हम पढ़ें, कोई स्कूल हो, कोई जगह हो जहाँ पर वो भी पढ़ें। बाकी बच्चों को वो देखती थी तो उन्हें दुख होता था। काफ़ी बच्चियाँ आती हैं, अपनी स्टोरी सुनाती हैं और हमें भी काफ़ी दुख होता है कि हम भी कुछ इनके लिए कर पाएँ। जब मैं जाती थी वो कपास चुनने तो मैं देखती थी कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके हाथ में नोटबुक्स है, पेंसिल है। मैं देख के रोती थी, मैं कि मम्मा मुझे कपास नहीं चुननी, मुझे स्कूल जाना है, जैसे ये बच्चे जाते हैं मुझसे भी और काम नहीं होता। मैं भी रात को सोचती तो मैं कहती कि काश भी एक ऐसा मौका आए कि भाई कभी मैं भी स्कूल जा सकूँ। Some institutions are working for the rehabilitation of such children and their families. One of such organizations is the Bunyad Foundation, which has been working for the welfare of people for the past several years in various areas of Punjab, and its main vision is to give children their real right, which is in the form of education. Therefore, the Bunyad Foundation is committed to providing basic education to people and is working on many projects in this regard, mostly for young children and adolescents living in rural areas. From the onset, I'd like to thank ILO for facilitating Bunyad from Lahore, Pakistan, for giving us an opportunity to take children, wean them away from cotton picking. And as the world knows, most of cotton picking, at least in Asia, is done by women, and more so young women and girls. Now the sad part is that in this area which we were given by ILO, identified, here the female literacy was as low as 11%. And that is horrible. It is a pain for us all. But poverty has this nexus of letting the women suffer more, and especially the girl child. ILO ने जो सपोर्ट किया है जी BLCC को इस ज़िमन में, उसके चंद मकासद हैं, और उनमें सबसे अहम मकसद तो ये है कि बच्चों को जो कि कॉटन पिकिंग बच्चे हैं उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाए और उन्हें स्कूल्स में रजिस्टर किया जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने के अहल हो सकें। मैं ये समझता हूँ कि हमारा अदारा जो है दूसरों से बेहतर इस लिहाज से है कि ये उन सारी रीज़न्स पे काम करता है जिनकी वजह से इसकी प्रेवलेंस होती है चाइल्ड लेबर की। हमने कम्युनिटी लेवल पे उनकी कमेटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया, कम्युनिटीज़ को, और वो इंडिपेंडेंटली अब चाइल्ड लेबर को आइडेंटिफाई करते हैं और वो कंसर्न डिपार्टमेंट को बताते हैं कि हमारे एरिया में इतने बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं, तो इनके लिए अल्टरनेटिव
कुछ वेज़ का इंतज़ाम किया जाए, उसमें एजुकेशन भी है, अगर कोई बड़ा है तो उसके लिए लिटरेसी है। हमने कम्युनिटी के साथ मिलके वहाँ पे 32 जो लोकेशन है उनका सर्वे किया है, जिसमें हमने स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन के बारे में, उनको अवेयरनेस, उनको मोटिवेशन, उनको मोबिलाइज़ करने के लिए सर्वे किया और उनकी बाकायदा लिस्टिंग की गई, उनको आइडेंटिफाई किया गया ताकि वो नॉन फार्मल सेंटर में उनको एनरोल किया जा सके। 32 pre-established community-based multi-stakeholder monitoring and corrective mechanisms are working to identify, prevent, return, and rehabilitate minors participating in the cotton value chain. One of these projects is to help eliminate child and forced labor in cotton, textile, and apparel value chains in Tehsil Khairpur, Tamiyanwali of Bahawalpur district. हमने 42 जो नॉन फार्मल सेंटर बनाए हैं और इसके अलावा हमने 10 मदर एजुकेशन सेंटर बनाए। तो उसमें हमारी जो अचीवमेंट ये है कि अभी तक हमारे पास वहाँ पे तकरीबन 1600 जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं, वो वहाँ पे पढ़ रही हैं और इसके अलावा 300 जो हमारे पास मदर्स, उन बच्चों की जो कपास चुनते हैं, उनकी माएँ वहाँ पे आई हैं और वो मतलब पढ़ रही हैं। उसका मकसद यही था कि सबसे पहले माँ को पढ़ाया जाए ताकि उनको एहसास हो कि मेरी बेटी की तालीम की अहमियत क्यों ज़रूरी है। जैसे जहालत की ज़िंदगी में रह रहे थे, थोड़ी सी हमारे ऊपर भी रोशनी पड़ी है, वो ना मैडम शेन की वजह से है। औरत पढ़ी लिखी होगी तो आगे आने वाली नस्ल भी पढ़ी लिखी होगी, अगर औरत जहल होगी तो उसकी आने वाली नस्ल भी जहल होगी। Bunyad also worked on partnerships and collaborations to help end child labor in the long term. तकरीबन कोई 70,000 लोगों तक हमारी टीम पहुंची। उसमें हमने एजुकेशन उनको दी, हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस दी, 1122 के हवाले से अवेयरनेस दी, लाइन डिपार्टमेंट के हवाले से अवेयरनेस दी, उनके जो बेसिक राइट्स हैं उनके हवाले से उनको आगाही दी और सबसे बढ़ के हमने उनको डिसेंट वर्क का जो कॉन्सेप्ट था उसको लोकलाइज किया ताकि लोगों को पता चला कि डिसेंट वर्क होता क्या है। The communities were more supportive. From total suspicion, they were very willing partners. मुश्किल था टास्क, लेकिन फिर भी बुनियाद फाउंडेशन की जो टीम थी और हम जो थे कमेटी मेंबर थे, फिर यहाँ पे कमेटी बनाई गई तो फिर हम लोगों ने डोर बाय डोर हमने विज़िट किया और लोगों को बताया कि बच्चियों की तालीम ज़रूरी है। लोगों की मिन्नतें मैंने की, जाके उनके घरों में बैठ गया कि भाई आप इधर बच्चों को ये फुट्टी कपास वगैरह चुनना बंद करें, आप 12 बजे तक बच्चे मेरे पास भेजें, उसके बाद आप जो मर्जी बच्चों से अपना घर का काम लें। कि बच्चों ठीक है, वालिदैन के साथ हाथ बटाना चाहिए, लेकिन है कि पहले तालीम। बुनियाद और ILO ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं और जिसकी वजह से इस रानी नामी गांव में बहुत इस्तिफ़ादा हमें हुआ है और ना लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। IOL और बुनियाद फाउंडेशन वाली टीम है, उन्होंने हमारे मोहल्ले में सेंटर खोला और हमारे टीचर के जो पापा हैं वो घर गए, उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को स्कूल भेजो। मेरे दादा ने कहा था कि नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूँगा क्योंकि हमारी बेटी नहीं जा सकती। फिर हमारे टीचर की मम्मा आई, उन्होंने हमारी मम्मा को समझाया, हमारी टीचर आई, इतनी मतलब मिन्नतें की, फिर जाके मेरे दादा माना कि मैं स्कूल जाने दूँगा। मैं अब ये बुनियाद फाउंडेशन सेंटर खुला है, इसीलिए अब हम पढ़ सकते हैं। अब गरीब बच्चों के लिए कॉपीज़, पेंसिल, बस्ता वगैरह सब कुछ फ्री हैं। टीचर हमारे घर आई, उन्होंने हमारा नाम लिखा और फिर मेरा स्कूल में दाखिला करवाया। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब स्कूल में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, मेहनत से पढ़ाई कर रही हूँ। To encourage reading habits and a learning culture in the target area, the BICC team delivered 1,399 books via mobile rickshaw library. हम कहानियाँ भी इतनी प्यारी पढ़ती हैं, हमारा दिल इतना खुश होता है, जो स्टोरी वगैरह वो सब कुछ हम पढ़ लेते हैं, हमें इतना अच्छा फीलिंग होता है ना, हम कहते हैं कि हमें बहुत खुशी है। Here the teachers played a very important part also. The teachers were willing to take up the challenge of making these illiterate, poverty-prone communities and their children into the learning mode. मैं उन औरतों को पढ़ाती हूँ जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, जो अपने हक़ के लिए बोल नहीं सकती। मैं उन्हें ये सबक देती हूँ कि अपने हक़ के लिए बोलो, थोड़ा सा बोलो लेकिन बोलो ज़रूर, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए। बच्चे यहाँ पे बहुत मतलब एक अपनी ज़िम्मेदारी से पढ़ते हैं। अगर ब्रेक होती है तो ब्रेक टाइम में भी बच्चे क्या है कि वो जो है अपनी ब्रेक को सही तरह से इंजॉय नहीं करते, वो जो है अपना पढ़ने में वो टाइम सारा लगा देते हैं।
हमारी जो टीम है वो जो प्रोग्रेस है उसको कुछ हम इस तरह से चेक करते हैं कि हमारी टीम वीकली बेसिस पे जाके वहाँ पे असेसमेंट कंडक्ट करती है, जिसमें हम उनकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, वर्बली भी और रिटन भी। तो इसके अलावा जो सब्जेक्टिव वेल बीइंग है उसमें भी हम उनका बाकायदा प्री असेसमेंट भी करते हैं। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जब प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो पोस्ट असेसमेंट करते हैं। उसमें फिर हम उनसे ये चेक करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा है, लाइफ उनकी कैसे चेंज हो रही है। सिलाई का काम भी रखा हुआ है और कढ़ाई भी सिखाते हैं, ताकि वो पढ़ने के साथ साथ थोड़ा हुनर सीखें, ताकि दिलचस्पी लें कि हमें यहाँ पे आके कोई ना कोई फ़ायदा हुआ है। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को भी घर में पढ़ाती हूँ, वो भी अभी तो छोटे हैं, मैं फिर भी उन्हें भी पढ़ाती हूँ और ख़ुद भी उनके साथ बैठ के पढ़ती हूँ। घर में अगर कोई मोबाइल पे कोई नंबर लिखवाना हो, मैं वो भी लिख के दे सकती हूँ। बाज़ार जाते थे, जो बिल होता था अब हम वो भी पढ़ सकते हैं, पहले नहीं पढ़ सकते थे, वो मैं पढ़ भी लेती हूँ, जमा भी कर लेती हूँ। ये कितने टोटल पैसे बढ़े हैं। मैंने अपने दादाजी को दवाई उठा के दी तो मैंने ऊपर पढ़ लिया कि डेट पढ़ ली कि इसकी मियाद तो ख़त्म हो गई है, इसलिए मैंने अपने दादाजी को दवाई नहीं दी और मैंने अपने दादाजी से कहा कि ये दवाई ख़राब हो चुकी है। मेरे दादाजी ने कहा कि तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा ऊपर डेट लिखी हुई थी इसलिए मैंने पढ़ के आपको बता दिया, इसलिए आप ये दवाई नहीं ले सकते। मेरे दादाजी बहुत खुश हुए। पहले मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मैं किसी के आगे भी बात का, मुझ में एक अजीब तरह की हिम्मत आई है कि पढ़ के इंसान भी कितना अच्छा फील करता है। The children of the cotton industry need more and more attention. For this purpose, there is a need for effective teamwork involving all stakeholders to take effective measures and efforts so that education reaches every home and every child. I would like to thank ILO for taking on rural children to move them out of labor, because mostly it is formal system like industries and all in urban based, but this is, I think, one of the first times that we were able to go into the rural areas and do this fantastic job. So wish us luck, not for us, but Bunyad is always focused on children, because children are the future not only of Pakistan but of the world. Baby, baby, yes mama, eating sugar, no mama, telling a lie, no mama, open your mouth, ha ha ha.